तीन टाइप रो इक्वालिटी पूरा कही जाइथिले हेलो तो yes ma'am. हाँ जॉन लॉक इंग्लिश फिलोसोफर ही इज द फॉरमोस्ट important defender of the idea of the equality based on the natural equalities of the men. Se कहले men are equal. Men are the conscientious gentlemen. They know what is right and wrong, what is just and unjust. जोटा कि तकर social contractualist theory आरंभ रे state of nature रे वर्णना करा जायछि. तो ई जगह रे what is the meaning of formal equality? Formal equality came to imply that by virtue of their common humanity, all human beings are equal, irrespective of caste, color, sex, and the creed. All individuals should be treated equally. जेहेतु समस्त human beings समस्त को हमें equality हिसाब रे treat करबा को पड़िबो. So ए जगह रे main notion यार हला the principles of the legal equality or equality before law. Equality before law कहले कोन बुझो legally every human beings are the equal. आईन आखिरे समस्ते समान irrespective of their caste, color, gender, religion, social background and so on. आईन आखिरे समस्ते समान ताको हमें मेन करी कहा जाउची फॉर्मल इक्वालिटी. फॉर्मल इक्वालिटी ऊपर कहार किसी डाउट्स अछि कि पचारो. No madam, no clear, all clear. बुझेला तो ठीक अछि. Okay, बुझिए. Then we will shift about the equality of the opportunity. What is this? Equality of the opportunities means removal of all obstacles or hindrances that prevent personal self development. Equality of the opportunity कहले समस्त ह्यूमन बीइंग्स और समस्तଙ୍କର पर्सनल डेवलपमेंट करिवार अधिकार अछि और जहा किछि भी बाधा विघ्न अछि ताकू रिमूव करा जिवो. It means that career should be open to the talent and promotion should be based on the abilities. रिजर्वेशन तक में जगह रे एते मात्रा रे दिया जाउ नाही किंतु कहा जाउछि जे कैरियर जो चाकरी गुडा को करा होछि that should be based upon the talent person आगो को जाउ and promotion ता केमति हबो based on the abilities, based on merit, status, family connection, social background and other factors. It must not allow to intervene. कोनसी फैमिली कनेक्शन हो कोनसी स्टेटस एबिलिटी सेटा एतार आखिया को आसीबो नाही यदि इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी समस्त को समान दिया जिवो. सो इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज एन एब्स्ट्रैक्टिव आइडिया दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइफ. यदि को जगह का को फेवर हेगरी के को जगह रे जॉब ता पाइला से जगह रे इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ए जगह रे देखा जिवो नाही कारण समस्त सब पोस्ट पाई कंटेस्ट करबा पाई सब चाकरी पाई कंटेस्ट करबा पाई समस्तଙ୍କର समान अधिकार अछि. That is the meaning of the equality of the opportunity. So consequences of this is need not for an egalitarian society. समांतरल society समस्तଙ୍କର ପାଇଁ तार meaning sta नुह because everyone started equally. Unequal outcomes are unacceptable. समस्ते equal हिसाब रे आरंभ होई छंती and unequal outcomes के भी हमें accept करि परिबा नाही and it cannot be legitimized. So inequality would then explain in terms of differing natural talents, ability to work hard and even luck. जेतेबेले हमें इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी अछि किंतु इक्वालिटी ऑफ द आउटकम गुटे भी कांसेप्ट अछि किंतु हमें समान पढ़ले भी गुटे क्लास रे जोड़े एक नंबर होछि तने दुई नंबर होछि आ देन ग्रेडेशन फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन होछंती तो सेही जगह पर नेचुरल टैलेंट रे डिफरेंस अछि देन एबिलिटी रे different अछि then it may be hard work or even the luck ताको determine करू अछि. This is the equality of opportunity. तो समस्त सोसाइटी रे इक्वालिटी opportunity पाई पारु छंती. This is equality of opportunity. आ equality of the opportunity क्षेत्र रे देखा जिवो the careers opens to the talents providing fair equal opportunity. कोनोसी अननेचुरल मीन्स रे इन्फ्लुएंस करके किए को जॉब पाइबो कि कोई कोनसी पोजीशन एक्वायर करबो एटा कहा जीवो नाही. ए क्षेत्र रे कैरियर्स आर ओपन्स टू द टैलेंट्स प्रोवाइडिंग फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मेनी वेरिएशन ऑन द पोस्ट
on the principle of the positive discrimination. Positive discrimination is other concept we'll read later on in affirmative action concept. Equality of the opportunity upre kichi doubts अछि जदि पचार. No. सब बुझी होची. Then equality of the outcome. Equality of the outcome. Outcome क्षेत्र करे कोन को हजिबो? Equality of the outcome पहिले. Equality of the outcome पहिले moving away from starting point in life to look at the outcome. हमें जते बले भी जहां काम करता रिजल्ट तार आउटकम ऊपर हमें ध्यान देबा को पड़ुची. कार्ल मार्क्स जर्मन पॉलिटिकल थिंकर से कहिथिले that any right to equality circumscribed by bourgeois economy can only be partial. Outcome ता जदि जणे जेमते कि सोसाइटी रे कार्ल मार्क्स जो सोसाइटी कथा कहि जाय छथि इन दैट सोसाइटी इन दैट कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर आर टू क्लासेस ऑफ द पीपल गुटे होछन रिच क्लास आ गुटे होछन पुअर क्लास. तो रिच क्लास ऑफ द पीपल वनकर पाखरे मान जदि सब सरप्लस भेलु तांगर पाखरे रखबे और लेबर क्लास मान को जदि किछि देबे नाही तटा इक्वालिटी ऑफ द आउटकम हिसाब रे ट्रीट करा जाय पारिबो नाही. से जगह मार्क्स कहि जाउछंती एब्सोल्यूट सोशल इक्वालिटी पॉसिबल ओनली इफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड. से कहिदिले प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी एबोलिश्ड. देयर शुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. जहां प्रॉपर्टीज रा नेशन ताकू पळे जाओ से प्रॉपर्टी दा समस्तंगर भल पई यूज हो. दैट्स व्हाई से कहिदिले देयर इज नेशनलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. So, defenders of the equality of outcome believe that guarantee of all other equality should be inadequate. जो भी equality गुड़ा को अच्छी सब सोसाइटी रे adequate नुहे तो हमें समस्त को outcome टा equal भाव रे distribution करी पारिबा. So long as equality of the outcome is not ensured. सेति भाई equality of the outcome लेति बोलता कि inclusive growth रो कथा कहै जाउछि. Equality of the outcome टा संभव पर एते मात्रा रे हे पारिबो नाही in the society. जेंता कि critics of the equality of the outcome से माने कहि जाउछंती जे that equality of the outcome may also lead to the stagnation, injustice and worst of all tyranny. सब tyranny रो मूल भी हे थाई पारे. So this is the equality of the outcome and it may माने थियोरेटिकली एटा कहा जाय पारे किंतु प्रैक्टिकली इक्वालिटी ऑफ द आउटकम में जहां पाउछु समस्त हम आउटकम टा इक्वल भाबरे डिस्ट्रीब्यूशन करी पारिबा देन इट इज नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी. देन आके किछि पचारिबो इक्वालिटी ऑफ द आउटकम रे. हेलो स्टूडेंट लिसनिंग, आर यू लिसनिंग? Yes. So some basic principles of the equality. Equality का किसी basic principle we'll discuss. Then कौन सब तमे किसी पढ़ी जो आगरू समस्ते आगरू किसी पढ़ी के आसी थिबो बुझलो. ओके हाँ इक्वालिटी ऊपर कौन किए किसी कहबो कि किसी जानी छो? Actually in our society basic discrimination माने बहुत सारे डिविजन है के रही छी why disparities in the standard of the living of the people. ए सब जो inequality असमानता सोसाइटी रे हमको समान तरला केमती करी अना जीव. that is most important principles of the equality that some individuals they are committed to be society where living conditions are not just bearable but are capable of providing satisfying and fulfilling life of the all. माने total equality टा possible न हेले भी आमे गुटे standard life just bearable life टे केमती करी possible करा जीवो सेटा होची main principles of the equality. And other principles of the equality हैला equal respect. Equal respect कोना? Equal respect implies opposition to any form of degrading talent or circumstances. Ideally a society based on fellow feelings. हाको हमें disrespect करी पारिबा नाही. Equal respect society रे समस्त को दिया जीवो. That an egalitarian position, गुटे समांतर position would oppose huge differences in the income, wealth,
not only between individuals but within nations. माने इगालिटेरियन सोसाइटी समांतर पोजिशन टा केबे भी पॉसिबल होई पारिबो कि सोसाइटी रे कारण समस्तंगर पाखरे इनकम रो डिफरेंस अछि वेल्थ रो डिफरेंस अछि एंड नेशंस ऑल ओवर नेशंस रे भी ए सब आमे डिफरेंसेस ता पाई पारुचु आ इन आवर सोसाइटी आमे सेक्सुअल रेशियल इथनिक एंड रिलीजियस इक्वालिटी and to some all other components of the equality in the society. Sexually, the men and the women, racially, racial inequality, blacks and the white, ethnic and the religious inequalities in the society are prevailing. So, आमे society रे the basic principle of equality हला आमे केमती करी people मान को society रे गुटे egalitarian position को आनिबा. That is the main basic principles of the equality. So there are some argument against equality. Equality, it is argued, it is a concept of untenable in reality because social position, social process are linked to the competition. Competition society re chalu achi. Competition society re challe jone winner habo and jone loser habo. And in this framework, equality of the outcome ta ame समस्तन को पाई पारिबा कि समस्तन को देई पारिबा कि सोसाइटी रे समस्ते गोटे अनुसार एवरेज मार्क आनिबे दिस इज नॉट पॉसिबल के हाईएस्ट मार्क रखि पारे गोटे लोएस्ट मार्क भी रखि पारे दैट्स व्हाई इन रिसेंट टाइम एवे हाइट फ्रेडमैन नोजिक आर एसोसिएटेड विथ द पोजीशन दैट says that egalitarianism as a threat to the freedom. यदि टोटाली समस्तन को आमे समांतर पोजिशन रखिबे बोली करी चेष्टा करबा सेटा जने इंडिविजुअल फ्रीडम को भी थ्रेटन दिया जाउची जोटा कि कहा जाउची आमे आमे जगह डिस्कशन करबा द डिफरेंशिएट प्रिंसिपल सम स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी should be provided to the weaker sections of the society काहे कि आमे रिजर्वेशन पॉलिसी रखाला तांको आमे ऊपर से माने जो तळरे रहि जाइछन तांको ऊपर लेवल को आनिबा पाई हमको रिजर्वेशन दा देबा को पड़िबो जदि रिजर्वेशन देला ताकू अनइक्वल बोली हमें कहि पारिबा नाही दैट इज डिफरेंशिएट प्रिंसिपल्स सो दिस मीन्स दैट सोसाइटी रे जेतु वीकर सेक्शन अछनी ताको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देबा को पड़िबो देन we discuss about the liberal justification of the inequality ए पॉइंट रे कहर कि डाउट्स अछि against equality, differentiate principles, affirmative actions principles. No, ma'am. The liberal justification of the inequality. The liberals के the liberal thinkers, the liberal को जे support करूछंती, they always justifies the principles of the liberty that the individual here stands as an important position. Actually, liberals गुड़ाक individual को central position रे रखुछंती and सेमाना कहउछन the individual are the rational individuals. And here is जगह the liberal they reject sex, race, class as the relevant criteria for treating people differently. सेमाना कहउछ बोले ए सब race, sex, class एटा गुटे relevant factor नुहे गुटे people मान को differentiate हिसाब रे treat करिबा पाई. But they do believe that it is just and fair if inequalities are earned. Inequality society रे भी रही पारिबो that is on the principles of the merit desert. जे जेति देखता देखि पारिबो से सेति earn करि पारिबो से सेति आकु जाई पारिबो that is the principle of the desert or merit meritorious principles. Thus liberal theory it holds that so long as inequality can be justified on the basis of the reward of the desert for special qualities and abilities or special contribution to the society is acceptable. जने जो बेसी लेबर कला जने टॉप रे रहला that is on the principles of the desert or merit आ जने जदी कम लेबर कला से तळकु रहइबो तो ए जगह रे हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहि पारिबा कि कहि पारिबा नाही सेति में लिबरल्स माने इन इक्वालिटी को ई टाइप रो इनइक्वालिटी को से माने सपोर्ट करूछंती मेरिट रे से माने विश्वास रखुछंती कारण
जड़े जब बेसी परिश्रम करबा से आगु जीव जड़े कम परिश्रम करबा से पछ रही जीव तो जड़े आम कहि परबानी कि समस्ते कहीं फर्स्ट डिवीजन पाइले नहीं कि समस्ते कहीं रैंक 1 रे आसिले नहीं दैट इज द डेजर्ट प्रिंसिपल और मेरिट प्रिंसिपल सो ए लिबरल्स माने ए इनइक्वालिटी को से माने विश्वास करूछंती माने इनइक्वालिटी को से जस्टिफाइड बोली कहउछंती एनी प्रॉब्लम any problems any question No. no question then equality and feminism this is the important concept in the today's world because a lot of the women movement are going on in the society the men and the women are two sides of the same coin still due to the social construction process it सेटा कि वोमेन्स मान को सप्रेसिंग सब्जेक्शन माने सबऑर्डिनेशन पोजीशन रे रहिबा को बाध्य करूछि तो हियर माने ऑक्युपेशन क्षेत्र रे लीगली ऑल आर इक्वल बोथ सेक्सेस आर इक्वल हेले भी इन द सोसाइटी रे माने गुटे सोशल सेक्टर रे से माने इक्वल पोजीशन पाई पारु नहंती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी दे जाइछंती आर्टिकल 14 सेज द राइट टू इक्वालिटी दैट all persons are equal हेले भी आमे सोसाइटी रे से माने से इक्वल पोजीशन एन्जॉय करी पारु नहंती ऑन द पॉइंट्स ऑफ द फेमिनिस्ट से माने कहि गले पोजीशन ऑफ द वुमेन्स substantive inequality their weak voice in family decision making their duty of the child rearing and subsequent withdrawal from the labor market धीरे धीरे से माने निजर घरोई कार्य रे एते मात्रा इन्वॉल्व हे जाउ छथि जे से माने लेबर मार्केट रु ताकर स्थानटा हटे दिया जाउ छी as they have nothing to do with their choices because of their social construct सेमति करी सोसाइटी रा कंस्ट्रक्ट हेची जोटा कि वुमेन्स माने लोअर पोजीशन एन्जॉय करिवे आ तांको इक्वालिटी हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देची मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल हेले भी सोशल कंस्ट्रक्शन तांको अनइक्वल रखुची सो लॉट्स ऑफ द फीमेल्स वुमेन्स मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट्स किसी पचारिबो कि इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म ऊपर स्टूडेंट No, ma'am. मैं जोड़े उत्तर दउचा समस्ते कोन करूछंती आज कते जरा नवा जान सब सुना जाउची तो Yes, ma'am. then equality and the liberty अगर हमें रिलेशनशिप देखिबा इक्वालिटी एंड द लिबर्टी एई जगह रे पढछु इक्वालिटी गोला क्लास रे हमें लिबर्टी ऊपर पढी सारथिला तो इज देयर इन रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड द इक्वालिटी लिबर्टी कहला कोन फ्रीडम इक्वालिटी कहला ऑल आर इक्वल तो ए तांकर किछि संपर्क अछि कि नाही बिटवीन द इक्वालिटी एंड द लिबर्टी equality and the liberty are two fundamental rights very dear to the every human being France revolution say equality and the liberty demand kari jaisanti and in the same way the American declaration of the independence recorded these two supreme faculties of the human beings that is freedom and equality liberty and the equality that all men are born equal समस्ते equal ही करी जन्म ही चंती and all are free all men are born equal and free yeah the relation between the liberty and the equality has been an object of the controversies among the political scientists what is this now we will read two opposed view about the relations between the equality and the liberty so good प्रथम ग्रुप ऑफ स्कॉलर गुडा कहि गले दे आर ऑफ द व्यू दैट in minority the minority holds the liberty and the equality are opposed to each other minority sections of the society se mane कहले liberty and equality are opposed to each other and two proposed in an inverse ratio means
increase in the liberty leads to decline in equality, and increase in the equality leads to decline in the liberty, and vice versa. So the main supporter of this view are Lord Acton, de Tocqueville, Hawkhead, Friedman, and some other thinkers. ମାନେ କଣ କହିଲେ all are vice versa, ବିପରୀତ ଗାମୀ ଅଟନ୍ତି। and second view କହିଲେ ସେ ମାନେ second view କୁ ଯୋଉମାନେ support କରିଛନ୍ତି they are groups of the majority of the scholars, and they hold that not only liberty and the equality are compatible, ସେମାନେ compatible ଅଟନ୍ତି, but also each is necessary for the other, duplicate ଦୁଇ ଲୋକ ପାଇଁ complementary ଅଟନ୍ତି। without liberty there can be no use of the equality, ଯଦି liberty ରହିବ ନାହିଁ equality ର କିଛି value ରହିବ ନାହିଁ, and without equality there can be no real liberty। so ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ, liberty ଆମେ enjoy କରିବା ପାଇଁ equality ର ଦରକାର, and equality enjoy କରିବା ପାଇଁ liberty ର ଦରକାର। so most of the modern scholar and all liberal thinkers views that they are the Lasky, Barker, McEver, and they are the supporter of this view। so currently in view of the first group rejects first view टा जो हमें देला liberty and equality are liberty leads to the declines in the equality and vice versa, से view टा reject करा जाउची, किंतु को भी सपोर्ट करा गला द सेकंड व्यू टा सपोर्ट करा गला। ई जगह रे सेकंड व्यू टा जरूरी अटे, कारण इक्वालिटी एंड द लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, जणे जण को एंजॉय करबा पई दरकार। सो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट अपोज टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। Our liberty is seriously hampered by with disparities of the wealth, education, by opening our minds and educating us with various skill is undoubtedly a liberating factor। जेते बेले जने एजुकेटेड हे जाउची से जगह लिबर्टी पाइले जाके से तार माने सब एजुकेशन और अदर सेक्टर का बेनिफिट से एंजॉय करि पारिबो, बट यदि एकाकी रहि जिवो सेटा से एंजॉय करि पारिबो नाही। सो जने जदि लिबरल प्रिंसिपल टा पाइला, से लिबर्टी पाइला, स्वाधीनता से जदि पाउची, तो से इक्वाली सोसाइटी रे इक्वल हेबा पाई किछि सोपान को आकु जाई पारिबो। दिस इज द रिलेशंस बिटवीन इक्वालिटी एंड द लिबर्टी। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क। Students, are you listening? Yes, ma'am. No doubt, ma'am. Then equality, then unit 5, equality, that is sameness versus differences। तुम्हारी unit 5 टा, तो ये जगह रे equality माने कौन हमें बुझना ए पर्यंत, equality denotes correlation between groups of the different objects, persons, process or circumstances that have the same qualities in at least one respect, but not all। so ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, different principle, it is different from the idea of being identical or sameness। equality କହିଲେ it is different from the idea of being identical or sameness। so the concept of the equality does not thus assume the things or the people are exactly the same or clone। ଆମେ total equality possible केबे भी सोसाइटी रे हे पारिबो नाही, जे sameness clone type रो to each other, but they are similar। so Thomas Hobbes, John Locke, J.S. Mill, and Karl Marx, they expanded the concept that Hobbes पहले human beings are free of the political, legal, and moral constant existing in the state of the nature। first liberty कहया है जो Hobbes से कहले ही माने ताकर social contractualist theory रे human beings are free, the state of nature से कौन कहले human beings are free and they are enjoying their natural rights। human beings को नेस्टी ब्रूटस एंड शॉर्ट हिसाब रे टर्म करी जाइथिले भी Hobbes is one of the individualist सपोर्टर होतंती। and this situation
जो ताकर स्टेट ऑफ नेचर स्टेट पोस्टअप हेबार आगरू जो सिचुएशन थिला ताकू स्टेट ऑफ नेचर कहा जाउची सो से स्टेट ऑफ नेचर रे से ह्यूमन नेचर को टर्म दे देछंती कहि जायनती व्हाट इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग सेला से माने फोर नेस्टी ब्रूटस एंड सॉर्ट ह्यूमन नेचर ऑफ द हॉबस्टा इट इज one type of the rule of the jungle it is one type of the rule of jungle जेमति कि जोर जार ब्लॉकटार परिस्थिति रे से माने काम करूछंती so in this situation the human beings are not free civil not free civil not free social and not free political तांगा पाखरे पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन नाही स्टेट भी नाही किंतु से माने फ्री सिविल भी नुहंते कि फ्री पॉलिटिकल भी नुहंते so that's why for equality men abandoned the state of the nature and they established their state and installed Leviathan as their rulers काहे से माने सेटा इंस्टॉल कले for a equal society so in this situation according to Thomas Hobbes would be that mutual fear due to natural equality जगह से म्यूचुअल समस्ते भयभीत होई से जगह रहिले कारण से माने कहले वी आर फ्री टू डू से कहला वी आर फ्री टू डू बट दे हैव नो कॉन्साइंस तो ए जगह से मानकर से माने नेचुरल इक्वालिटी रो कोन फायदा उठेले कि ताकर फायदा रा उठेलेनी नेचुरल इक्वालिटी रो फायदा उठे करी से माने किछि मात्रा डेंजरियस सिचुएशन रा सामना करबा को जाउछंती दैट्स व्हाई दिस the claim is that no one is subservient or prominent strength to not be vulnerable to the other जने जन पर क्षति करबा को जाउची ए क्षेत्र रे दैट्स व्हाई से माने स्टेट ता कंस्ट्रक्ट करले एंड इंस्टॉल द लेविएथन एज द रूलर बट अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक से गुटे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट से कोन आर्ग्यू देथिले द ह्यूमन बीइंग्स आर conscientious gentlemen they are good human beings there is prevalence of the conscience still for a equal society se mane tanger pakhre the human beings are bhal human beings know what is good and just and what is right and wrong still they abandon the state of nature but दो तांगा पाखे तो भलो कंडीशन थिला से माने स्टेट ऑफ नेचर को काई abandon करबा को चेष्टा करले because there was no ruler there was no government there was no state and the government where ruler te darkar तो सेति पय से माने स्टेट ऑफ नेचर को abandon करले and established their state and established their government so there are different interpretations about this Karl Marx Engels तांगर communist manifesto रे they focused on the historical promises of the economic inequality in the society that is the division between the rich and the poor in the society between the worker and the property owning classes their understanding of the equality was based on ending the differentiation between social classes the social exploitation ta kemti kori bond kara jibo society re on the basics of the ownership and exploitation that come from it so the modern conception of the equality that is within the law is based on the various axes of the inequality such as class, race, gender, caste in India and forms the basics of the social justice. So here the important theories on the concepts of the equality are connected by various themes that is social justice. What is social justice? Society रे different type of the people गुड़ाक बसवास करूछन एंड समस्तंकर पाखरे जस्ट एंड द ह्यूमन पोजीशन पहुंचुची बोली कि आमे कहि पारिबा नाही तो आमे सबु सेक्शंस मान को जदी ठीक जस्ट पोजीशन दिया गला दिस इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल in our subsequent lectures that types of the equality is agar types of the equality अछि then what is equality of the treatment first होची equalities of the treatment equality of the treatment there are two types गुटे हला formal then next हला substantive equality formal equality कहले कोन बुझा जाय
formal equality, this is popularly known as legal equality, जोटा कि formally all are equal in the eyes of the law, that is formal equality. And this legal equality or formal equality, it assumes that one law should apply to all. गोटे law टा समस्तंकर ऊपर apply करा जिवो without regard to individual differences. Individual differences को आखि बुझी देकरी गोटे legal rules टा सब बड़े apply करा जिवो. But what is substantive equality? Substantive equality hela, it recognizes differences and can be seen as equally different. For example, it looks at the causes of the disadvantages caused by the differences and aims to improve it through equal opportunity and the dignity. Society different underprivileged sections माने अछंती. तो से underprivileged sections माने केमती करी ऊपर को उठी पारिबे. तार किसी स्पेशल ट्रीटमेंट दले जाके ऊपर को उठी पारिबे. So से माने ताको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट दे करी स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे करी ताको डिग्निटी ता हमें ऊपर को ले पारिबा. This is substantive equality. It recognizes the differences and can be seen as equity. This is substantive equality. Then here we discuss the equality of the outcome. जोटा कि आगुरे भी हमें पढ़ी जाइछु equality of the outcome. Equality of results. Outcome कहले कोन? Results. This equality of the results focuses on the treatment to produce equality. हमें जो हमर result टा सेटा केमती करी equal भाबरे distribution हेई पाइबो. So here that it recognizes the need for unequal treatment. It recognizes the need for unequal treatment to achieve equal results and fair distribution of the benefits for the citizens. Unequal treatment to achieve equal results. For example, special treatment should be provided for the weaker sections of the society. Today, blind people अच्छी. ताको हमें किसी special benefit देबा जदी से जे इक्वालिटी आर को जाई पारिबो इक्वल आउटकम मु से अचीव करि पारिबो. That is known as affirmative action principles. Affirmative action principles means that some special treatment, some more important treatment should be provided for the weaker sections of the people to raise their standards. For example, that affirmative actions within the Indian Constitution that allows for reservation. Reservations, SC, ST and OBC sections man people man को दिया जाउची. ताको हमें equality of outcome कहि परिबा नाही बोली हमें सेटा एग्री हे परिबा नाही. So the problem with equality of results is that it does not fundamentally examine or change the condition that leads to discrimination. So therefore, the use of these strategies or framework has to be accompanied by structural changes to tackle the root of the discrimination. माने जो peoples माने आगरू discriminatory treatment पाई आसी जाई छंदी सेते से माने तोड़वा रे रही जाई छंदी. ताकू जदि हम किसी स्पेशल ट्रीटमेंट देबा से माने ऊपर लेवल को आसी पारिबे. That is affirmative principle, affirmative action principle. बुझियला स्टूडेंट? Yes, ma'am. समस्ते बुझी पारुछ कि नाही? Yes, ma'am. आ किसी डिफिकल्टी? ओडिया रे इंग्लिश रे दुई लैंग्वेज रे कहा जाउची जा होची किसी डाउट्स अछि से जगह रे मते पचारिबो. Then here equality of the opportunity. What is equality of the opportunity? आमे समस्त सोसाइटी रे equality of the opportunity दिया जाउची. Equal treatment alone does not overcome the structural discrimination. Equal treatment जदि देला structural discrimination जो discrimination हमर structure करके रखी जी. जेंति कि article 17 says the abolition of the untouchability. से पुरातन जुगरु untouchability जो discrimination भेदभाव होई करी से लोक माने आसीचंती. तो तांक से ही discrimination को उठेबा को पड़िबो. That is structural discrimination. So according to this view, equal opportunities would help tackle institutional discrimination.
So the use of the metaphor of the race, it is that the people should have the same starting point in race, and can be judged fairly on individual merit without considering of other identity factor or the race, gender, etc. So Bernard Williams ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି the idea of the equality. Here he differentiate between procedural equality and the substantive equality. Procedural equality कौन? It means removal of the obstacle. It means removal of the obstacles in the path of the disadvantages section जो lower sections of the people माना अछंती ताको जो obstacle गुडा को अच्छी ताको remove करा जाए. Removal of the obstacle in the path of the disadvantages to take that opportunity, so that does not ensure that they will actually be able to do so. But this is the procedural opportunity. But other view, substantive equality ta kono? Substantive equality of the opportunity. This helps through measures that ensures that all citizens have the means to fulfill the criteria for a particular opportunity. ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ opportunity ଅଛି to fulfill their own criteria. This is equality of the opportunity. Then equality of the responsibility. Equality of the responsibility कहले a person should be held accountable to his own actions. We are responsible for our own actions, and thus places in it the centers of the autonomy of an individual. We are responsible for our own acts. Different proponent of this view, they believe that unfair distribution of the resources and goods is fair if it is caused by the person's decision. Society unfair distribution of the resources अछि, there is not fair distribution of the resources. But इस जगह हमें कौन हमारे main focus टा हैला, a person should be held accountable to his own actions. That is equality. We are responsible for our own actions. हमें जहाँ करिबा हमें से actions पाई निजे दायी रखिबा. Then equality of the dignity. Equality of the dignity is based on the individual's dignity and worth of a person, the value of a person. The individual value, and that is on the basics of equal rights. Unjust treatment towards a person is seen as harmful and offensive. With a person who unjust treatment, this is harmful principle. It is offensive to an individual fundamental human dignity. हमें हर human dignity को हमें अनदेखा करि पारिबा नाही. This is unjust principles. That is equality of the dignity. हर स्वाभिमान को हमें threaten करि पारिबा नाही. Then equality of the capabilities. Capabilities approach किए नहीं गले. Amartya Sen. This approach was popularized by Amartya Sen in a study of the equality. Amartya Sen से कही गले, he proposes that distribution should be based on the various things a person is able to do or be during their lives. Distribution टा जेमती हिसाब रे भी होउची a person is able to do and during their lives तार time भितरे से सेटा करि पारुची. That is the capacity principle. आमर जदि मन न हम से कामटा करिबा कि आमे जदि कैपेबल से कामटा करिबा, दैट इज कैपेसिटी प्रिंसिपल. गुटे छुआ को जते बही पत्र आनी कर दिया गले ताको पढ़ बोली कहबो, किंतु से जदि न पढ़िबो तार निजर कैपेसिटी रे ऑन देयर ओन कैपेसिटी, देन से केबे भी सक्सेसफुल हे पारिबो नाही. तो कैपेसिटी ता इंपोर्टेंट. एबो पहिले डिस्कस कली, कार किछि डाउट्स अछि मैम फॉर्मल इक्वालिटी. हाँ, व्हाट इज फॉर्मल इक्वालिटी? आज्ञा फॉर्मल इक्वालिटी तमे आगरो क्लास रे नथिला कि? फॉर्मल इक्वालिटी मींस लीगल इक्वालिटी
all are equal in the eyes of the law, irrespective of caste, color, sex, or any type of the discrimination. समस्ते आईन आखिरे समान. Formally all are equal. ये अगर किसी special privileges दिया जाऊ नहीं, कि कौन सी protective discrimination दिया जाऊ नहीं. आज्ञा मैम. हैला. आज्ञा. Or any other queries? Equality of the capacities टा हमरे capacity based approach. हमर capacity न थिले हमें से कामड़ा करी पारिबा. मैम difference between equality and liberty. Equality and the liberty. What is the difference between the equality and the liberty? Hello. What is the difference between the equality and the liberty? आज्ञा. What is equality? Equality means all are equal, irrespective of caste, color, sex. But liberty means freedom. Yes ma'am. Liberty is freedom. Liberty is derived from the Latin word liber, which means free the individual. This means freedom. आमे जो freedom टा अनुभव करूचु in our society. बोला क्लास रे liberty ऊपर हमें discussion करितला. And specifically it focuses on the liberty of the individual. जो स्वाधीनता पाई आगरू बहुत सारा संग्राम गुड़ा को है सारी चीज. So this is freedom. Freedom means liberty, but equality means all are equal in the eyes of the laws. That is formal equality. Then equality and the Indian Constitution. Indian Constitution रे equality ऊपर कौन सब कहा जाए ची. हमें ऐसा ठीक है focusing करी बात है. Article 14 of the Indian Constitution. अगर कोई वाला Article 14 that rights to equality our fundamental rights रो कही जाए ची. The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of the India. कहा को हमें डिनाय करी पारिबा नहीं equal protection of the law. So the phase of the equal protection of the law has been taken from एटा को amendment रो बोला Article 1 to 14 amendment of the Constitution of the United States of the America. So all citizens are the equal before law, and it also allows for the protections of the law. Law which go against the gain of the fundamental rights can be declared as unconstitutional. It is further supported by other parts of the Constitution. So that Article 15 of our Constitution is prohibition of the discrimination. Article 14 कौन पहले prohibitions of the discrimination on the basis of the religion, caste, sex, place of birth. Article 16 it focuses on the equal opportunity in the public employment. Public employment रे समस्त equal opportunity अच्छी. Article 17 which abolishes untouchability. So all these article deals with right to equality. Actually, one thing, Article 25 interpret करिगले our Constitution that promotes equality of the religious practices to guarantee the religious freedom to diverse communities of the India. One thing here, Article 377 of the Indian Penal Code. इटा ये ऊपर हमें टिके discussion करिबा. Article 377. This is the colonial law. This criminalized same-sex relationship between the citizen as unnatural. Unnatural कोई करी सेटा criminalized करी थिला as therefore punishable. Until recently, on the 6th September 2018, the Supreme Court of the India repealed this section 377. This section को repealed कले for consenting adults in the country. This section was seen as a violation of the various fundamental rights, such as the right to the equality को violate करती से tipin से section ताकू repealed करा गला, and thus this was regarded as unconstitutional. So here the concept of the equality before law is addressed as either minimizing or
eliminating inequalities in terms of the income, status, and access to the facilities and opportunities made possible by the state. Equality before law concept को आमे काहे की यूज करा जाउची ए क्षेत्र रे पर आमे जो हमर जेते भी डिफरेंसेस अछि इनइक्वालिटीज अछि ताको एलिमिनेट करबा पई ताको मिनिमाइज करबा पई इक्वालिटीज बिफोर लॉ कांसेप्ट ताको आमे प्रोपाउंड करा जाउची इट आल्सो इंप्लाइज securing adequate means of the livelihood adequate means of the livelihood माने कोन समस्त को फूड क्लॉथ एंड शेल्टर टा प्रोवाइड करा दिबो जेमति and promoting educational and economic interest of weaker sections of the society. Weaker sections of the society जो माने हाँ ये किसी पचार चो की any doubts? So it also implies securing adequate means of the livelihood and promoting educational and economic interest of weaker sections of the society. जगह हमें देखिबा the scheduled caste and the scheduled tribes. Specifically the protection of the scheduled caste and the scheduled tribes from the social injustice and all forms of the exploitation. So here, equality, a positive right, it postulates not merely legal equality, but also real equality. खाली हमें legal law देखी करी equal करले ते जगह हमें सब equal treatment society पाई पारिबो नुहे हमें गुटे रियल इक्वालिटी जोटा के प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को आखिया करे रखी करी सोसाइटी अनइक्वल सेक्शंस ऑफ द पीपल मान को इक्वल करबाटा होची द रियल इक्वालिटी खाली आईन आखी को आईन को नहीं करी हमें समस्त इक्वल करी पारबा आईन रो भय देखि करी नाही हमके रियल इक्वालिटी अछि मेजर कॉन्शियस देखि करी हमें से रियल इक्वालिटी टा को यूज करबा सोसाइटी रे अनइक्वल ट्रीटमेंट को दूर करी पारिबा. So, आप ये किसी पचारिबो any doubts? No doubts, students? No, ma'am. Then unit second रे differential treatment and equality of the outcome. ए जगह इम्पोर्टेंट इश्यू अछि एफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी जोटा आगु हम जे कहितली हमें एटा ब्रीफली डिस्कस करबा ए जगह तमर क्वेश्चन गुटे भी आसी पारे हाउ डू यू जस्टिफाई द कांसेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन हाउ डू यू जस्टिफाई द कांसेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन गुटे क्वेश्चन ते तमर आसी पारे ए जगह रे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन the differential treatment and equality of the outcome ता ऊपर हमें किसी फोकसिंग करबा ए जगह रे that all human beings are equal जोटा कि आगु कथा अछि all human beings are equal but the idea of the equality does not mean that all material goods equality कहले हमर जेते material goods national income all educational opportunities available in the society should be equally distributed among all members of the society हमें जहाँ आम सोसाइटी रे देखु सब इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन हे पारिबो एकर यथार्थता दे पारिबा कि बट ऑन द अदर हैंड इट इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल विथ डिफरेंसेस इन फिजिकल मेंटल फैकल्टीज एनर्जीज एंड स्किल्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनल क्वालिटीज आमे प्रथम कथा हला सोसाइटी रे हमर जहा जिंस हम देखुछु वेल्थ मटेरियल गुड्स द नेशनल इनकम ताकू आमे इक्वल समस्त भाव इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन करि पारिबा कि नॉट पॉसिबल आ गुटे चीज हमें देखुछु सोसाइटी रे जो ऑन दिस जो पछा वर्गर लोक अछंती डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तांको हमें किछि मात्रा रे स्पेशल ट्रीटमेंट देबा को पड़िबो फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द एससी एसटी ओबीसी सेक्शन जेंति कि हैंडिकैप सेक्शंस ऑफ द पीपल मान को आमे किछि स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाउची तो तांको ए सब काहे के दिया गला टू इंप्रूव देयर पोजीशंस जो कि कॉमन पीपल मान को सहित से माने सोसाइटी रे ताळ देखि चली पारिबे तो ता द्वारा कोन हबो इन द सोसाइटी वी आर एबल टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस द जस्ट सोसाइटी today social justice से जगह हमें पाई पारिबा
So the principle of the equality has assumed a number of the forms, and most significant among the formal equality, equality of the opportunity, and equality of the outcomes. And the idea of the equality of the opportunity means the removal of all obstacles. Equality of the opportunity कहले आमर जहाँ सब hindrances बाधा अच्छी से सब को दूर केमती करी करा जाई परिबो for our own self development or self realization. So it advocates that all individuals should have an equal start to life or equal life chances. ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆମେ निजर लाइफ टा स्टार्ट करि परिबार अधिकार अछि एंड हमर चांसेस टा इक्वल हिसाब रे उपभोग करि परिबार हमर अधिकार अछि. So where there is differential treatment, that is affirmative action. The term differential treatment here refers to a policy measures that are consciously designed by the state to discriminate among the citizens by certain specific criteria to protect interest of the weakest among them. Different type of the policy measures designed करा जायछि by the state to discriminate among the citizens by certain specific criteria जोटा कि certain weakest sections मानकर people मानकर पाई protect करिबा पाई किछि policy किछि rules regulations किछि provision गुडा को recommended करा जायछि. This is differential treatment. This is related to the affirmative action. It is a policy through which special privileges are granted to the underprivileged sections of the society. Underprivileged sections of the society मान किसी special privileges दिया जाउची. Through which special privileges are granted to the underprivileged sections of the society who in the past or present have been the victim of social, caste or racial discriminations. माने social, caste और racial discrimination रो शिकार हे करी आसीचंती सेठी पई से को आमे किछि स्पेशल ट्रीटमेंट मारगनती काने सोसाइटी रे आकु उठी पारिबे. These are affirmative actions programs. So different type of the affirmative action programs are undertaken by governments for improve the weaker sections of the society. This principle of the protective discrimination is known as the reservation, reserve discrimination, positive or affirmative action or preferential treatment. एई कथाटा को हमें different type of the ना दिया गला. पहला कोन कहा गला protective discrimination. This is also known as reservation, reserve discrimination, positive or affirmative action इटा कहा गला. Then preferential treatment भी दिया गला. किसी मात्रा रे preferential treatment दिया गला for the weaker sections of the society to raise their standards of the living in the society. And these provisions together from the framework of the analysis of the concept of social justice. ये सब काहे करा गला to establish social justice in the society. So the main agenda of introducing differential treatment is to protect the weaker sections of the society. Weaker sections of the society people मान को हमें protect देबा पाई ए special treatment ता दिया गला. And this सही sections of the people गुड़ा को they are historically neglected and exploited to free the disadvantaged sections of the society. Then गुटे hegemony society, powerful society they establish करबा पाई there is the need of the differential treatment or affirmative actions principles. So किसी question पचारिबा, any doubts about this students? Any doubts? No doubts. बुझी होची differential treatment society रे काई दिया जीवो, affirmative actions टा कोन, protective discriminations टा कोन, सब बुझी होची तो आज्ञा ठीक अछि. तो where there is differential treatment सही कथा हमें रिवीजन करबा एबे. where there is differential treatment, this differential treatment is accepted in the society. Ideally the state regards all citizens are equal in the eyes of the law. समस्त society रे equal अटंती. However, the modern liberal state has recognized the necessities
and avenues of the differential treatment among its citizens. जो माने weaker socio-economic background रे अछंती ताकू किसी special treatment दिया जाऊ. If a significant part of the population जदि से माने discriminatory social practices रो शिकार है चंती ताकू किसी special treatment देबाटा किसी unjustified नुहे. जेमती कि यूएस रे scheduled caste, scheduled tribe in India and blacks peoples in the USA. Blacks peoples in the US तांको किसी special preferential treatment दिया जाऊँ to reform and regenerate the society from social evils. Social evils to society को free करवा पाएं certain specific and definite and bold measures are taken for the eradication of the social maladies or social evils. And this is the needs of the hour. इटा हमर समयर जरूरत अटे. So where there is need of the social justice ऊपर तमे किछि जानना. So where there is need of the social justice, our society ta on inequalities and injustice re fulfill hey kari rahichi. Our society has always been full of the inequalities and injustice. So there was widespread prevalence of the racial and the class disparities, class divisions, class with division disparities achieved on their education, wages, living conditions, social status was dictated by the whims of the upper status or upper sections of the society. Upper sections of the society, से माने class क्षेत्र रे living condition, social status, तांकर wages रे, तांकर ऊपर level रे अछंती. That's why the economic backwardness brought social humiliation. Economic जो backwardness रहला, से social humiliation face करिबो. So एई जगारू society को free करिबा ना करिबा पाई. In a society fragmented by the caste, racial, gender division, dominant section occupying the major portion of the resources, pull the levels of the power. So here, for centuries, this practice existed, where the weak and vulnerable sections had to serve the ruling classes without being able to voice their grievances and without any mechanism to address them. So there is a need of the special treatment, that is differential treatment should be provided to the vulnerable sections of the society to raise the standards of the living. The weaker sections of the society are the vulnerable, endangered sections of the society are special privileges, special status, किसी अग्राधिकार दिया जाऊ जहाँ पर भी से माने तांग ऊपर लेवल को उठी पारिबे, सोसाइटी रे समान ही करी काम करी पारिबे. So social and the political inclusion of the weaker and vulnerable sections, that are protective discrimination कहबला, that differential treatment, it was introduced to uplift the condition of the deprived sections to bring them as par with the mainstream of the societies. This policy is known as affirmative action, that is reverse discrimination, because this provides differential treatment to certain deprived sections, just as overtly as it was used to discriminate against them in the past to semane jo discriminatory treatment भोगी आसिचंती ताकू समाधान करबा पई तांको हमें किसी स्पेशल फैसिलिटी देबा. So this is the affirmative action principles. Then here the same principle about equalities of the outcome, that equality of the outcome हमें डिस्कस करी सारी चु. That हमर जो unequal treatment जो दिया जाउची affirmative actions or preferential treatments for the weaker sections of the society, is justified? Yes, this is justified. Yes, this principle is the justified to increase the level of the weaker sections of the society. जोटा कि Karl Marx कही जाइछंती जे after the revolution सरला परे, after the Bolshevik revolution, society रे जेतेबेला communist socialist society established होची, at the time there was no class के रहुनांती, state भी रहुनी, and at that society
every people are equal. ସେମାନେ ଯେତିକି ଆର୍ନ କରିବେ ସେତିକିରେ ସେମାନେ ଚଳିବେ and there is no class, there is no state, there is no class in the society and all are equal. That's all. And any doubt, any queries or any problem, students, please ask. Any doubts, any clarifications? ମ୍ୟାମ୍ SC/ST ମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଅଛି? এটা SC/ST reservation 226 ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। that is differential treatment affirmative actions policy ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅପର ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କର ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ଚଳିପାରିବେ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ତ ସେମାନେ ପୁରା ଉଠି ସାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭେସନ କଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଛି?